Hello and welcome again. Now, in previous video we studied how to produce charge and what are the different ways of producing charge. We also studied that there is a law, Coulomb's law, which helps you to calculate the amount of force that a charge can apply on another charge. और आप ऐसे कह सकते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी वो आपको बताता है Coulomb's लॉ, एंड दैट इज बेसिकली F इक्वल्स टू सम Coulomb's कांस्टेंट 1/4/ε0 Q1 Q2 upon R square. Now, if a charge is produced, suppose in air, in somewhere a charge is produced and that charge will be having a region or a space in which अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो क्या कर सकता है, उस पर फोर्स लगा सकता है. either that force can be a force of attraction or force of repulsion. So now what we will call that space? That space around the electric charge in which it imposes electric force, same the Coulomb force, on another charged body is called as electric field. So electric field क्या होता है? एक जगह है ना, एक चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहां पर वो दूसरी चार्ज्ड बॉडीज पर फोर्स लगा सकता है, चाहे उनको अपनी तरफ पुल करे या अपने से दूर फेंके. जस्ट लाइक इफ दे आर लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर, इफ दे आर अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो अब हमारे पास पहले से एक कंसेप्ट है फोर्स, तो हम क्यों चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ने? इट्स ऑल बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट, that force, that charge, electric force per unit charge will be defined as a new quantity, and that will be your electric field intensity. Now, so electric field intensity at any point, suppose आप बैठे हैं, you are a charge, and आपसे 2 मीटर दूर एक और छोटा चार्ज है, कोई आपका भाई बहन या कोई और पर्सन, there is a small another charge. So it is going to experience, now suppose you are like charges, so that same charge is going to experience an outward force. Now that amount of force divided by the amount of charge on which that force is applied by you or by the greater charge, the source charge, will be called as electric field intensity. Electric field intensity at a point is, electric field is defined as electric force experienced by unit positive test charge, unit positive charge. So just like unitary method जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भाई 10 पेन का प्राइस इतना है तो बताओ एक पेन का प्राइस कितना होगा. तो सेम कंसेप्ट से हम डील करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में. सो टेल मी द टोटल फोर्स, टेल मी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स, एंड आई विल टेल यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. ओके, सो अगर हम इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, सो कैसे करेंगे? नाउ सपोज दिस इज अवर चार्ज. So if we are having a 3D structure, if we are having a 2D structure, so let us say this is our source charge capital Q, and from this charge at a certain distance R there is another test charge Q naught. So if they both are of same nature, suppose our test charge is already positive and this is a positive charge, so this is going to repel this outward. So electric field intensity at this point experienced by this Q naught, all because of this, will be equals to F by Q naught. Now this charge should be very small, it cannot be zero, है ना. If something becomes zero, then physical quantity अगर कोई zero हो जाए तो फिर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, है ना. Now just like if Q is very small, now why we are taking Q naught to be very small? It is all because कि उस Q naught की वजह से ऐसा ना हो कि उस Q naught की वजह से भी कुछ उसके चारों तरफ फील्ड क्रिएट हो, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपके फर्क डालने वाला है ना. सो दैट्स वाई द चार्ज शुड नॉट अफेक्ट द अदर चार्ज इफ इट एंड इफ शुड नॉट, if sorry it is it
it should not produce its own field. But if we go practically, पॉसिबल ही नहीं है ना. दैट मीन्स ईच चार्ज इज गोइंग टू प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ये उसी तरीके से काम करता है कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और किसी एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपये हैं. तो अगर आप उसको 100 दें या उससे 100 ले लें, तो दैट मीन्स इन कंपैरिजन टू दैट 1,00,000 योर 100 अमाउंट इज वेरी वेरी स्मॉल, और वी कैन से दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. Now if we talk about the unit of electric field intensity, that is force, unit of force is Newton, unit of charge is Coulomb, so it is Newton per Coulomb, or you can further convert it into several basic units. Okay, so now let us say कि हमारे पास वही एक point charge है. Let us say we are having a point charge, and due to this charge at some certain distance r, we want to calculate electric field intensity. So that will be obviously force divided by Q naught. Now if we further simplify it, we will get 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square, and this R will tell you, the R cap will tell you the direction of electric field intensity. Electric field intensity की direction totally force की direction पर depend करती है. That means tell me the direction of force, and that same will be the direction of electric field intensity. For positive charge, obviously it's outward, and for negative charge, it is inward. Now, if you are having a system of charges, so just like in Coulomb's law, we studied that there is a principle, superposition principle, in which the total force acting on a charge will be the vector sum of all the forces acting because of some other charges. Similarly, total electric field intensity due to any charge will be experienced by any charge at a point will be equals to, if there are several other n number of charges, then add those, make a vector sum of all the electric field intensity, and you will come to know the net electric field intensity at that point. Now if we talk about electric field lines, so basically इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट जस्ट लाइक, एक इलेक्ट्रॉन को आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शायद या उससे होने वाले एक्सपीरियंसेस को आप महसूस कर सकते हैं, है ना. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटली इमेजिनरी लाइंस हैं. अब वो क्यों हैं? ताकि जब हम कुछ चीज़ समझें तो हम कम से कम उसका डायग्राम बना सकें, है ना, हम समझा सकें लोगों को, दूसरे पर्सन को समझा सकें. सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स. दे आर सिंपली स्मूथ कर्व्स which are going to represent the electric field in a particular region. Now they originate from positive charge. That means they will start from a positive charge and they will end or terminate in a negative charge if there is a negative charge. Otherwise they will go outward only. Lines, those lines are continuous. That means they are not going to break in between, but still they are not going to form closed curves. Now these closed curves, we will again study these terms when we will study magnetic field lines. Just like electric field lines, magnetic field lines are also continuous, but they are closed. But electric field lines are not closed curves. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो वी विल एट दैट वेरी पॉइंट हम तुरंत पता कर लेंगे द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट. नाउ सिमिलरली अगर दो टेंजेंट एक जगह इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर कहीं, तो नाउ यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द सेम पॉइंट. दैट मीन्स at the same point you are going to have two directions of electric field, so which will be a contradictory statement. So no two field lines can intersect each other. Okay, जितनी ज़्यादा पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा, या उतना ज़्यादा आपको ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
जितनी लाइन दूर दूर होंगी, दैट मीन्स रेयर द लाइन्स वीकर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब ये तो होगी बात कि भाई ये तो एक थियोरेटिकल हमने बता दिया कि ऐसा होता है। नाउ वी वांट टू ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर द डिफरेंट चार्जेस, दैट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक। Simply, just like they are simply smooth curves which represent, that means they are only our drawings. Okay, so now electric field line, just because of positive charge. So if you are having a positive charge plus q, then all the electric field lines will be radially outward. अगर आपके पास एक स्फीयर होता तो आप उसके अंदर कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते थे उसके सेंटर से उसकी सरफेस को टच करने वाले, इनफाइनाइट नंबर। सो similarly these lines are also radial. Now how many electric field lines are available? दिखने को हम रिप्रेजेंट करने को हमने कुछ 5 7 10 20 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सो फॉर प्लस चार्ज, so it will be outward, and for negative charge it will be inward. If both charges are kept together, if there is a combination of charge, now this combination we will study afterward also. Okay, this combination है ना, combination of two system of charges. Now in which if we are having a plus q charge minus q charge, then electric field lines will go out from, they will be originating from plus q, moving outward, they will be terminating in plus q. So you are going to see this kind of curves. Now see, these curves are continuous, they are not breaking, but they are not closed. That means they start from q plus q, they ends in minus q, but from minus q they are not coming back to plus q. So that means they are not closed curves, they are smooth non-terminating curves, but they are not closed curves. So if there were two plus same charges, like charges were there, they are going to have these types of curves.